dear students. Today we will continue our chapter 4, heat. You have already discussed heat. What is heat? Heat is basically a form of energy that makes an object hot. यानी किसी ऑब्जेक्ट को हॉट किया जाता है, गर्म होता है जो ऑब्जेक्ट, that produces heat. Now we will discuss transfer of heat, that means flow of heat, mode of heat, how heat conducts, that means conduction. Three ways to conduct heat are conduction, convection, radiation. Then their applications and kinds of clothes we wear in summer and winter. Now the transfer of heat. What is transfer of heat? Dear students, you have seen a hot cup of coffee. गरम कॉफ़ी का कप देखा है, चाय का और मिल्क. बट आफ्टर सम टाइम इट विल गेट कूल. ठंडा हो जाता है वो थोड़ी देर में. सिमिलरली अगर आप कोई चिल्ड कोल्ड ड्रिंक की बॉटल रेफ्रिजरेटर फ्रिज से निकालते हो, इफ़ यू take some chilled cold drink bottle from out of the refrigerator and keep it outside for some time, it will become warm. Why it happens? क्यों होता है ये सब कुछ? Because this is all due to one reason, that is the flow of heat from the surroundings. जो सराउंडिंग्स से हीट मिलती है उस वजह से वो ठंडी चीज़ गर्म और गर्म वाली ठंडी हो जाती है. दैट मीन्स दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसफ़र ऑफ हीट. That heat flows from a body at higher temperature to a body at lower temperature. This is called as transfer of heat. Heat can be transferred in three different ways, that is conduction, convection and radiation. And now we will discuss them in detail. Now first mode of heat transfer of heat is conduction. Conduction is the process by which heat is transferred in solids from hotter end to the colder end. That means this process only happens in solids, because in solids, this you know that कि solids कौन से material होते हैं जो hard होते हैं. These are solids लाइक नहीं, सॉफ्ट में भी हम काउंट कर सकते हैं, बट सॉलिड लाइक जैसे मेटल है, वुड है, कंटेनर्स हैं, आपके यूटेंसिल्स हैं, दीज आर ऑल सॉलिड्स. तो हीट ट्रांसफर्स ओनली इन सॉलिड portion, that is called as heat transferred in solids from one portion to another. आप कोई कंटेनर गर्म करते हो, फ्लेम के ऊपर रख देते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल द लोअर पोर्शन विल गेट हॉट, then the upper portion, then the sides will get hot, then the handle, then the upper portion will get heated up. That means the heat will transfer from lower portion to higher portion. Now in this activity, the activity given below, that you can also do at your home, but in the presence of your parents only. What you will do, you will take a rod, iron rod or aluminium, any metal rod you can take, fix some wax on it. वैक्स के पीसेस जो होते हैं, मोम के पीसेस, उनको फिक्स कर लीजिए. टेक अ लाइटेड कैंडल एट वन एंड ऑफ द रॉड. वहाँ पे एक साइड पे लेकर जाइए लाइटेड कैंडल को, एंड इट स्टार्ट्स हीटिंग द रॉड. रॉड को हीट करना स्टार्ट करेगी. व्हाट यू विल सी आफ्टर सम टाइम, द वैक्स विल बिगिन टू मेल्ट एंड फॉल डाउन फ्रॉम द हीटेड एंड. धीरे धीरे वो वैक्स क्या होगी, आपकी मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी और वो नीचे गिरने लग जाएगी. That means this shows that the iron rod gets heated up. That means the heat is transferred from the hotter end to the colder end by conduction. Is it okay? Now, the transfer of heat takes place through direct contact only. That means अगर आपने कोई फ्लेम पे चीज़ रखी है, कोई कंटेनर रखा है और खाली है, you know that it will definitely heat it up. होगा गर्म, सीधे सीधे गर्म हो जाएगा, कोई बीच में कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर. एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, अगर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा है, तो जब वो आपस में कॉन्टैक्ट में ईच अदर हैं, देन द ट्रांसफ़र ऑफ हीट विल कंटिन्यू until the temperature of the object becomes same. जब तक सेम नहीं हो जाता वो चीज़ कंटिन्यू रहेगी आपकी. लाइक इफ़ विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस हॉट सूप. मैंने एक कंटेनर में, आई हैड टेकन अ हॉट सोप इन अ कंटेनर एंड पुट अ मेटल स्पून इन इट, और एक मेटल स्पून इसमें लगा दिया. ओके, आफ्टर सम टाइम व्हाट यू विल ऑब्जर्व, दिस मेटल स्पून बिकम्स हॉट.
योर फिंगर्स विल फील हॉट, आपके फिंगर्स को गर्म लगेगा ये मेटल स्पून. दैट मीन्स द स्पून इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द हॉट सूप and the heat will transferred from soup to the metal spoon. Is it okay? Clear? Then is conductors and insulators. This you have already studied. What are conductors? Which allow materials, वो वाले materials जो allow करते हैं heat को pass होने के लिए. That is called as conductors like iron, aluminium, all metals. They allow heat to pass through them. Insulators which do not allow, जो allow ही नहीं करते heat pass हो. That is wood, plastic, air and water are also insulators. Clear? They do not allow heat to pass through them. Now our second mode of transmission of heat is convection. Convection this occurs or this takes place only in liquids and gases. It is the process by which heat is transferred in liquids and gases. Only in fluids it will take place, from hotter part to the colder part. You have seen at your home when you boil of water, what will happen? Some small bubbles you will see at the bottom of the water. After some time they will go upward. So this will happen in case of convection. That means the transfer of energy takes place in liquids or gases, or you can say in fluids. What will happen when gas or liquid is heated up? The particles, the molecules present in them, already the molecules are loosened molecules are present. Their intermolecular spaces are very much high. आपको पता है कि हमें पढ़ा हुआ है कि molecules are very much far away in liquids as well as in gases. So when they heat it up, they gets loosen up, और ज़्यादा लूज हो जाते हैं, and then they move upwards, और ऊपर की, and they become light in weight also. That is why they move upwards, ऊपर की तरफ जाने लग जाते हैं. Now the space left here, नीचे स्पेस रह जाएगा. तो what will happen? The colder particles, the cooler water, or you can say colder particles, they quickly take their space. वो उनका फटाफट से उन जो सराउंडिंग में कोल्डर पार्टिकल्स होते हैं वो जल्दी से उनकी जगह पर आ जाते हैं. दैट मीन्स द स्पेस लेफ्ट बाय देम इज क्विकली फिल्ड बाय द कोल्डर पार्टिकल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स. नाउ दीज कोल्डर पार्टिकल्स, अब ये कोल्डर पार्टिकल्स जो हैं दे बिकम हॉट, धीरे धीरे ये गर्म हो जाएंगे, एंड दे बिकम लाइट. नाउ दे राइज अपवर्ड्स, अब ये ऊपर जाना शुरू कर देंगे. सिमिलरली द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल फ्लूइड गेट्स हीटेड अप. जब तक सारा पानी या कोई भी फ्लूइड है लाइक लिक्विड और गैस जब तक गर्म नहीं हो जाते, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू. दिस इज कॉल्ड एज convection. In this way convection process takes place. Now two types of convectional currents. Two types of convectional currents are what? Sea breeze and land breeze. These types of these you have already heard about them, and these are the phenomenon of coastal areas. Basically they will happen, these sea breeze and land breeze are formed in coastal areas. Now sea breeze caused during the day. During the day what will happen? The land gets heated faster. The air above the land gets heated faster than the water. The air above the water, that will not heat it faster, because water at least boils at 100 degrees Celsius. This you know that. उसको टाइम लगेगा उसको गर्म होने में. The air above the land that heated faster than water. Now this becomes light in weight, the air above the land, and it rises up. और वो as it heated up, it rises up. The air above the land that becomes hotter and rises up. Now the cooler air, what will it will do? The cooler air from the sea rushes towards the land to take its place, and the warm air from the land that moves towards the sea to complete this cycle. In this way the cycle will complete it. First it will rushes upwards, then the cooler air will take its place, and this warm air will come to the sea place.
Okay, from land move towards the sea to complete the cycle. The convection current from sea to land causes sea breeze. Now is land breeze. Land breeze forms during night. What is that? During night, what will happen? This the land loses heat faster than the sea water. That means now the water becomes the air above the water, that is hot. The air above the water is hot. Now it rises up because it is lightened in weight. It rises up. Now the air above the land, that is cool, and it will take the place of, and it will move towards the sea and occupy its place. Okay, occupy its space. Now the convection current from land to sea causes land breeze. Is it okay? Now is the transfer of heat by convection in air. Now convection in air, that means lighted a candle. This is again we will do it by a activity, and this we have what you have to do, you have to do this activity under the supervision of your parents only. Take a candle, light it up, keep a hand over it, okay, above the flame. What will you see? The air between this portion, the air gets heated up by the convection. जो इस पोर्शन के बीच में एयर प्रेजेंट है, दैट विल गेट्स हीटेड अप, एंड दैट्स वाई योर हैंड फील्स हॉट. इसकी वजह से आपका हैंड जो है वो हॉट फील करेगा. बट इफ़ यू टुक सम हैंड ऑन द साइड ऑफ द कैंडल, you will not feel as hot as the above hand. उतने गर्म नहीं दिखाई दे, पता चलेगा आपको जितना ये हैंड फील करेगा गर्म, ये वाला उतना नहीं. दिस हैंड विल नॉट फील एज मच. Why? Because there is no convection, no convection process takes place here. As there is no convection process, or you can say transfer of heat takes place. Air does not feel as hot as at the top. Top वाली air जो है, that will feel hot because it becomes hot. Is it okay? Next is radiation. Radiation is the process by which heat is transferred from one place to another without the help of any medium. What is the meaning of medium here? That means no solids, no liquids, no gases. कोई मीडियम नहीं है, एम्प्टी स्पेस है आपके पास. हीट इज़ डायरेक्टली ट्रांसफर्ड. और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सन. सन गिव्स the sun's radiation directly reach the sun earth, that you know that these are the sun radiations that directly reach the earth. That is why on sunny day you take umbrella with you, because it's if you go outside you have an umbrella with you on a sunny day, because its radiations harm your skin also sometimes. Similarly, if you sit near a fire, फायर के पास अगर आप बैठे हैं, आग सेक रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन? वी फील वार्म. वाई? ड्यू टू द हीट रेडिएटेड बाय द फायर. फायर से जो हीट आ रही है, दैट इज़ द डायरेक्ट हीट, नो मटेरियल मीडियम इन इट. तो दैट्स वाई वी फील हॉट व्हेन वी सिट नियर द फायर ड्यू टू द रेडिएशन ऑफ फायर गिवन बाय फायर. ओके, ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट. एग्जाम्पल आपके पास है. विच हॉट बॉडी यू कैन टेक? लाइक माइक्रोवेव यू कैन टेक. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से उसमें से भी हीट प्रोड्यूस होती है. इज इट ओके? तो दैट इज़ वाई माइक्रोवेव ऑल्सो गिव्स अस heat the things with the help of radiation process. Okay, heat the things with the help of radiation process. Now come to the topic dark colored and लाइट कलर्ड सर्फेसेस. हम घरों को डार्क कलर या लाइट कलर का करवाते हैं. क्यों करवाएंगे हम? या हम कोई और जैसे हमारे सोलर कुकर्स हैं या हमारी पाइप्स हैं, सोलर हीटर्स हैं, उनको हम क्यों ब्लैक कलर में करवाते हैं? या हमारे पास जो रेडिएटर्स हैं वो पेंटेड ब्लैक क्यों होते हैं? कार के रेडिएटर्स हैं. दैट वाई वी पेंटेड देम ब्लैक. This we will clear in this topic. Like dark colored surfaces absorb more heat than light colored surfaces. This we will
understand with the help of the activity. We will take two containers. दो कंटेनर्स लेंगे, वन पेंटेड ब्लैक एंड अदर पेंटेड वाइट. एक को वाइट ब्लैक पेंट करेंगे, एक को वाइट. टेक इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन देम. दोनों में इक्वल पानी लेंगे, वाटर लेंगे, एंड कीप देम इन अ सन एटलीस्ट फॉर 1 to 2 hours. After 2 hours, what we will do? You will measure the temperature of both. ओके, टेम्परेचर थर्मोमीटर से आप इनका मेजर कर लेंगे. नाउ व्हाट यू विल सी, द टेम्परेचर इन द ब्लैक कंटेनर or the water in the black can is warmer than the water in the white can. Why? Because it absorbs more heat. Black container absorbs more heat. और यही एग्जाम्पल किसके साथ के हैं ये? फॉर लाइक सोलर, लाइक ब्लैक पाइप्स are of solar heaters and the containers of solar cookers. They are painted black from outside. Why they are painted black from outside? Because they absorb the light from the sun. They absorb the maximum light from the sun. That is why they are painted black from outside. Now if we talk about the dark colored surfaces radiate more heat. Again we will take the same containers like black painted container and white painted container. Now we will take the water in it, but water of same temperature, like we will take water, lukewarm water in it. Keep them in a shade मतलब छाया में हम इन्हें रख देंगे, और in any room. ठीक है, for at least for 20 minutes or 15 minutes. Again we will measure the temperature. Now what will happen? The water in the black container is cooler than the water in the white container. जो ब्लैक कंटेनर में पानी है वो उससे ठंडा होगा ज़्यादा. दैट मीन्स इट रेडिएट मोर हीट अवे. और ये एग्जाम्पल्स किसके ऊपर हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? दैट द रेडिएटर्स ऑफ द कार और द एयर कंडीशनर्स, दे आर पेंटेड ब्लैक. वाई दे आर पेंटेड ब्लैक? बिकॉज टू रेडिएट द हीट अवे. Is it okay? Now we wear clothes, different types of clothes in different seasons. Like in dark color clothes in winters, because it absorb more heat. ज़्यादा heat absorb करते हैं वो, and they keep us warm. And we wear light color clothes in summer. Why? Because they reflect heat. Most of the heat को reflect करते हैं and they keep us cool. हमें ठंडा रखते हैं. ये डार्क कलर क्लोथ्स दे कीप अस वार्म, हमें गर्म रखते हैं, एंड दे एब्जॉर्ब हीट को एब्जॉर्ब करते हैं अच्छे से. ऑल्सो वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर. वाई वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर? दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. वूल इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. पुअर कंडक्टर है वो हीट का. एंड द एयर प्रेजेंट इन दैम, इन द वूल फाइबर्स, जो एयर प्रेजेंट है वूल फाइबर्स में, दैट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ हीट. यानी हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देती. दैट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम अवर बॉडी, सो वी फील वार्म. इज इट ओके? नाउ योर चैप्टर इज completed. Okay, now read page number 40, 41, 42, 43, 44. That means up to 40 to 44 very carefully from your NCERT book. Clear everybody? Thank you students. Have a nice day.